This module is about capital budgeting, and in this, we'll be talking about the cash flows related to an investment in a project where we are replacing a project with a new one. यानी एक प्रोजेक्ट हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेशनल था और उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई और हम इसको नए प्रोजेक्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं. So, replacement decision is actually a combination of two decisions. Number one, that we have to salvage the previous asset or the previous project, and we have to acquire the new asset or the new project. हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से हमारी कैश आउटफ्लो होती है. दैट इज व्हेन वी आर परचेजिंग अ न्यू एसेट which requires a cash outflow. And we have discussed that in the previous modules that how we calculate the initial cash outflow. उसमें purchase price शामिल है, उसमें direct cost शामिल है, जिनको हम add up करके initial cash outflow calculate करते हैं. दूसरी बात, जब हम पुराने एसेट को डिस्पोज ऑफ करने जाते हैं तो लास्ट ईयर ऑफ द यूजफुल लाइफ में हमारे पास जो कैश फ्लो की फिगर आती है उसको हम टर्मिनल कैश फ्लो का नाम देते हैं. सो दिस टर्मिनल कैश फ्लो इज ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज सॉल्वेज, जिसको हम कंक्लूड करके ख़त्म करके हटा रहे हैं और उसकी जगह दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर आकर उसे रिप्लेस कर रहे हैं. सो at the same time, in the same year, we have got the terminal cash flow of the old project or the old asset, and we also have the initial cash flow of the new asset. हमने ये देखा था कि अमूमन जो टर्मिनल कैश फ्लो है वो इनफ्लो की शक्ल में ही होती है, क्योंकि उसमें जो बड़ा चंक है वो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो का शामिल होता है और कुछ एडजस्टमेंट साल्वेज वैल्यू टैक्स वगैरह वर्किंग कैपिटल की हम उसमें करते हैं. लेकिन जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है, जो नए एसेट को परचेज करने के लिए है, जो रिप्लेस कर रहा है एसेट, वो सर्टनली हमारी आउटफ्लो है. तो रिप्लेसमेंट डिसीजन के अंदर ऑन वन हैंड वी हैव गॉट इनफ्लो एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव गॉट आउटफ्लो. सो द नेट वैल्यू ऑफ दैट will be considered for the purpose of making a decision related to capital budgeting involving a decision related to replacing an asset. Have a look at this table which actually explains that how we make the calculations. कैसे हम एक नए asset की cost को consider करते हैं which is something that requires outflow, और फिर हम कैसे पुराने एसेट की टर्मिनल कैश फ्लो को कंसिडर करते हैं, एंड देन हाउ डू वी एक्चुअली मेक द डिसीजन. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दैट. द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट इज सर्टनली द आउटफ्लो. तो इसके बाद जो भी लाइंस में चीज़ें आ रही हैं, अगर हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट बढ़ रही है और कैश आउटफ्लो हो रहा है. सो लाइन 1 में cost of the new asset actually indicates the cash outflow. All the capitalized expenditure, which are insurance and freight and other direct costs, these are also outflows. That is why these are added in it. Similarly, we talked about taxes and duties. ये भी हमें गवर्नमेंट को पे करनी है और इससे भी आउटफ्लो होगा, इसीलिए हमने उसको भी ऐड बैक कर लिया. फिर हमने दो पॉसिबिलिटीज देखी पिछले मॉड्यूल में कि हो सकता है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इन द टर्मिनल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट हमारा जो पुराना एसेट है वो डिस्पोज करते वक्त हमें कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़े. अगर ये सूरत हाल होगी तो कैश आउटफ्लो बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे. लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमें उसको सेल करके कुछ कैश इनफ्लो, कुछ गेन हासिल हो जाए. सो यू कैन सी दैट इन लाइन एफ दैट if there is a cost involved on disposal of the asset, this will be an outflow, so it will be added in it. But if there are proceeds from the sale of the old asset, then it will be an inflow, so that is why it will be deducted. Likewise,
if there is a cost of disposal, so there is a saving in tax. तो अगर cost of disposal outflow थी तो saving in tax नेगेटिव हो जाएगी, यानी उस आउटफ्लो में से माइनस होके उसको रिड्यूस कर देगी। और अगर दूसरी सूरत हाल हो, यानी एसेट को सेल करके हमें कुछ कैश प्रोसीड्स मिल जाए, तो उस केस के अंदर हमें उस पर टैक्स पे करना होगा, एंड दैट विल बी एन आउटफ्लो. So this explains these positive and negative signs. You mean from the beginning, if there is an outflow and we are adding something in it, that means all those additions are outflows. And if we are subtracting something, that means it is the inflow. And finally, you can see in the last line that there is an increase or decrease in the net working capital. अगर increase in working capital होगी तो वो outflow हो जाएगी, वो add हो जाएगी, और अगर कुछ वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाए तो वो इनफ्लो हो जाएगी, उसको हम उसमें से माइनस कर लेंगे, एंड देन व्हाट वी गेट इज नेट कैश फ्लो ऑफ द रिप्लेस्ड एसेट. आखिर में हम इस बात को दोबारा से डिस्कस करते हैं और अपनी इस डिस्कशन को इस पॉइंट पर कंक्लूड करते हैं कि जो रिप्लेसमेंट डिसीजन है, इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं. एक वो एसेट इन्वॉल्व है जो कि हम बेच रहे हैं, जिसको हम ऑपरेशंस ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरा वो एसेट इन्वॉल्व है जो हम नया ख़रीद रहे हैं. इन दोनों एसेट्स की कैलकुलेशन से हम आउटफ्लोज और इनफ्लोज को कंसिडर करते हैं. जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है पुराने एसेट का टर्मिनल ईयर में, लास्ट ईयर के अंदर, उसको हम यहाँ पर कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका नए एसेट से, जिस एसेट को हम रिप्लेस करके लेकर आ रहे हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है. सो दिस कैलकुलेशन रिक्वायर्स एन इनिशियल आउटफ्लो ऑफ द न्यू एसेट, द डायरेक्ट कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, प्लस any increase in the working capital, and there are possibilities of additions or subtractions, meaning outflows or inflows in case of the cost of disposal or the revenue generated from the scrap value. So this is how we calculate the cash flow in case of replacement of an asset.